the poem The Ballad of Father Gilligan. The Ballad of Father Gilligan. It's composed by William Butler Yeats, W.B. Yeats. Last time we were taught the poem Daffodils, composed by William Wordsworth. कवितार ना होची Ballad of Father Gilligan. Ballad meaning story, a story, long poem where a story is told, a story is narrated. So ballad is generally a narrative poem. Narrative माने जो थे गोटे जो कवितारे गोटे बड़ स्टोरी कहै जाय सेटा को narrative poem कहै जाय. Ballad टा गोटे narrative poem. The Ballad of Father Gilligan. गोटे फादर को विषय. फादर माने चर्च रो फादर, चर्च रो मुख्य. ताको ना होची गिलिगन. ताको ना होची गिलिगन. Father Gilligan was a very philanthropist father. He took care of sick men, ill persons in his area, in his parish. So he was very well known and praised by others. Father Gilligan एमिति गोटे लोक थिले तांको समयर से गोटे फादर थिले चर्च रो आ तांको चर्च अंडर रे जेतिकी एरिया आउथला सेतिकी एरिया रो लोक मानकर से रोगी लोक मानकर जत्न नउथिले. सेतपे से बहुत परिचित थिले, लोक मान ताको बहुत भल पाउथिले. सो ए जो पोएम रे अछि तार स्टोरी टा मु कहि दोछि. व्हाट हैपेंस इन दिस पोएम? Father Gilligan falls asleep in his chair because he was very tired because he had been taking care of his patients and sick people for a long time. But when he falls asleep, somebody tries to wake him up, but he cannot wake himself up. And when he wakes up in the morning, he realizes that one of his sick people must have been dead by now. So he rushes to that person's house and finds that somebody having the same features of himself, that is Father Gilligan, has come to the sick person, and the sick person has died just after the same looking Father Gilligan's duplicate has gone away. Okay, कौन हिची Father Gilligan सोई पड़थिले थरे कारण से बहुत गरीब माने रोगी लोक मानकर सेवा करी से बहुत हालिया हे जाइथिले, टायर्ड हे जाइथिले. सो तांकर गोटे ड्यूटी थिला आ गोटे लोक को केयर करबा पे, किंतु डाकिले मते से उठी पारलेनी कारण से बहुत हालिया हे जाइथिले. सकाळे से जेतोळे उठिले तांकर मन पड़ला से लोकटारो तांकर जत्न नबार थिला. जने रोगी लोकर से रोगी लोकर घर को गला बेले से जणा पड़छि जे फादर गिलिगन जिमि देखा जाउछन्ते तांको बेले आ गोटे लोक आसीकी से रोगी लोकर जत्न नैछि आ से रोगी लोकटा कोन हिचे खुशी रे मरि जाइछि. से दुरारोग्य रोग रे पड़थिला, भीषण रोग रे पड़थिला, से बंचुवार चांस नथला. किंतु आउ जने फादर गिलिगन भले देखा जाउथु आउ लोकटे आसीकी तांको टिके सेवा जत्न नवा पर से रोगीटा सुख रे मरिछि. ओके, सेतबेले फादर गिलिगन खुशी रे आठमाड़ी पड़ जाइछन्ते कारण से बुझिछन्ते जे एक्चुअली तांकर डुप्लिकेट किए आसिनी, भगवान ही तांकर डुप्लिकेट करिकि जणे एंजेल को देवदूतन को पठै दैछन. सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. माने सिंपल होचे जे लोक मानकर सेवा करे भगवान तांकर सेवा करन. ए कवितार मूल लक्ष्य. ओके. The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock were in their beds or under green shorts lay. The old priest Peter Gilligan. Old priest Peter Gilligan, Father Gilligan, was weary night and day. Weary meaning tired. Tired night and day because he is working night and day. That's why he is very tired. For half his flock were in their beds. Flock meaning group of people. Flock of sheep. Mendha dala. Flock meaning group. 80 group people. Was very night and day. For half of his flock were in their beds or under green shorts lay. अधा
लोक तांको अंचल रो अधा लोक बेड रे पड़िचंती रोगी हेकी पड़िचंती आ अधा दल लोक मरि जाइछंती ले अंडर ग्रीन सॉड्स SODS सॉड मीनिंग ग्रास सबुज घास तले पोती हेकी अछंती माने मरि जाइछंती सेकंड स्टैंजा once while he nodded on a chair at the mock hour of eve another poor man sent for him and he began to grieve. Once while he nodded on a chair. So he sat on a chair. At the mock hour of eve. Mock hour, evening time. Mock hour of eve meaning evening time. Moth meaning insects. Poko. Poko jogo ketole asanti sakale ba sandhya time re. So seta ko mock hour kuaje. Mock hour of eve, another poor man sent for him. आउ गोटे गरीब लोक डाकी पठेला जे आम घर गोटे रोगी लोकटे अछि ताको केयर करिया पे टिके आसंतु जत्न करिया पे टिके आसंतु ताको ठीक करिया पे टिके आसंतु एंड ही बिगेन टू ग्रीव से कोन कले दुख कले ग्रीव मीनिंग दुख करिबा ग्रीव वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीफ ग्रीफ माने दुख ग्रीव इज वर्ब फॉर्म ग्रीव माने GRIEVE मीनिंग वर्ब फॉर्म become sad दुखित होबा grief meaning दुख GRIEF and he began to grieve and he began to become sad third stanza first stanza रे कोन हिची फादर गिलिगन दुख करछन जे तांकर लोक मरि जाउछन न रोग रे अछन आ तांको वर्तमान टिके हालिया लागुची कारण से दिन जाक परिश्रम करछन से चेयर रे बसछन चेयर रे बसलो जने गरीब लोक तांको डाके आसी जे आपण टिके आसनु जत्न नबे आउ जने लोकर सेतले से मना करछन जे मु जाई परिबे कारण मु निजे टायर्ड अछि I have no rest third stanza I have no rest nor joy nor peace for people die and after cried he God forgive my body spake not it so when the poor man came for asking help from Father Gilligan said in his sleep that I am unrest, my soul is unrest now and I cannot go to help another person. जेहेतु मोर आत्मा वर्तमान दुख रे अछि लोक माने मर जाउछन मु आगरे मु निजे फिजिकली अनफिट अछि वर्तमान सेतबे मु जाय परिबि नै I have no rest not joy not peace रेस्ट नै मो पई जॉय नहीं खुशी नहीं पीस शांति नहीं फॉर पीपल डाई एंड डाई कारण लोक माने मो आगरे मरि जाउछन्ते मु जते चेष्टा कला मते मरि जाउछन्ते एंड आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव माय बॉडी स्पेक नॉट इट तापर संगे संगे से रियलाइज करछन जे मु कोन भूल काम कहि देली इमित कोन कहिली गरीब लोकटा पठे देली संगे संगे से भगवान क्षमा मांगछन्ते गॉड फॉरगिव मी गॉड मते क्षमा कर दियंतु मु कहिनी मो पार्टी कहि देला fourth stanza he knelt and leaning on the chair he prayed and fell asleep so kon hela and the moth hour went from the fields and stars began to peep he knelt and leaning on the chair re basi padi ki anthu mari ki basi padle he prayed and fell asleep he prayed to God and fell asleep while praying to God on his chair he fell asleep and the moth hour went from the fields the moth hour the evening hour went away and stars began to peep and stars came up in the night so night approached फादर गिलिगन कोन कोले आंठु मारी की बसी की भगवान क्षमा प्रार्थना करछन से समय से केतल जान जान सोई पड़छन्ते आउ इवनिंग टाइम पळे की राती पळे आछ फिफ्थ स्टैंजा they slowly into millions grew and leaves shook in the wind and God covered the world with shade and whispered to mankind. They slowly into millions grew. They meaning stars. आकाश रे तारा गुडा को गोटे रु मिलियन पर्यंत 10 लाख पर्यंत हेले मिलियन मीनिंग 10 लाख अगणित बहुत and leaves shook in the wind रे पवन रे leaf पत्र हलिला and God covered the world with shade. God covered the world with shade. रात्रि हेला अंधार हे जाउची शेड माने शैडो छाई अंधकार डार्कनेस and whispered to mankind to sleep
भगवान राति हेले अंधकार दे दियंती आ लोक मानक कान रे शांति रे सोइबा को विस्पर करते विस्पर माने कान रे फुसफुस करी कहबा विस्पर WHISPER विस्पर मीनिंग कान रे फुसफुस करी कहबा भगवान कान रे फुसफुस करी की लोक मान कहउछन सोइ पर राति हेले 6 स्टैंजा ताले कोन छै फादर गिलिगन सोइ पड़थिले प्रेयर कर गुरु प्रार्थना कर गुरु सोइ पड़थिले आ राति पळे आसला upon the time of sparrow chirp when the moths came once more the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor upon the time of sparrow chirp upon the time of sparrow chirp sparrow meaning घर चटिया chirp 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 घर चटिया जो साउंड करछि पक्षी माने जो साउंड करछन्ते सेटा होछि chirp so upon the time of sparrow chirp when the sparrow chirps when the sparrow makes sound of course in the morning time सकाळ हेले घर चटी आसी की साउंड करछि upon the time of sparrow chirp upon the morning when the moths came once more outer insect man जेतोळे आसिले the old priest Peter Gilligan the old priest Father Gilligan stood upright on the floor he stood straight on the floor upright meaning straight सीधा छिड़ा सो सकाळ हेला पर तांकर चेतना पसला से उठी पड़ले कहले कोन हला मु सोई पड़थिली गोटे गरीब लोकटे आसला तार ये गोटे रोगी लोकटे ताके सेवा करि आसला मु भूल रे ताको पठे दिछि भगवान प्रार्थना करी कि जा पर जीवी बोली बसथिली किंतु सोई पड़छि जानि पाले 7 स्टैंजा Mebron the man has died while I slept on the chair he roused his horse out of its sleep and rode with little care Mebron is not an English word rather it's an Anglo-Irish word but Ireland ro word ta Ireland hochi England पाखा पाखी गोटे देश Irish word ta गोटे ताकर भाषा होची Irish टिके से English पाखा पाखी किंतु अलगा बहुत अलगा so Mebron word ta आछि mo meaning my bron meaning sadness my sadness or alas आमे दुख रे कोन कोचे alas जेमि खुशी रे कोचे वाओ सेम दुख रे कोचे alas alas the man has died while I slept on the chair he roused his horse मु जेतोले सोइथिली निश्चय से लोकटा मर जाइथिबो जो गरीब लोकटा डाकिबा बसला तार के परिचित निश्चय सेही रोगी लोकटा मर जाइथिबो he roused his horse out of its sleep and rode with little care rouse 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 meaning उठाइबा to wake up somebody else wake up निजे उठबे को होची wake up अन्य जन को बा rise RISE आउ जन को उठबे को होची rouse ROUSE he roused his horse तांकर घोड़ा को से उठेले out of its sleep घोड़ा भी सोइथिला ताकि भी उठेले and rode with little care and rode ride रो past tense होची road RIDE ride past tense road RODE not ROAD and rode with little care without any care not caring for the road he rode the horse रास्ता रो केयर न करी रास्ता केमिति खालो डिपो न केयर करी कि घोड़ा रे बसी कि चली से 8th stanza this is a long poem having 12 stanzas now we are continuing 8th stanza he rode now as he never rode by rocky lane and fen the sick man's wife opened the door Father, you came again. He rode now as he never rode. Father Gilligan एमिति चलेले घोड़ा को जेमिति कि से केबे मध्य चली नथले. By rocky lane and fen. The road was how was the lane and fen? Lane माने road. आमे साई माने करे विभिन्न lane थाउची LANE lane अमुक lane 1 अमुक lane 2 से टाइप lane meaning road fen FEN not FAN FEN meaning marshy land watery land संतोषंतिया जगह rocky 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 meaning पथुरिया रास्ता पथुरिया हो संतोषंतिया हो से सेटा को केयर न करी के आगु मारी चले the sick man's wife opened the door father you came again so से रोगी लोकटार स्त्री लोकटा कोन कला से रोगी लोकटार स्त्री कबाट खोलला पचारला फादर आपण आउट रे आछन्ते 9th stanza
आउ थे आछन फादर इज शॉक्ड माने मु तो एबे आसले सकाळे आबरु आउ के आसले एंड father is saying and is the poor man dead he cried he died an hour ago the old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro so the father Gilligan is asking the wife is the poor man dead se gariब lokota se rogi lokota mori gala ki the wife says he died an hour ago घंटे टे पूर्व से जस्ट मर जाइए the old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro sway meaning move to and fro meaning from this side to that side एपट सेपट मूव करे से के फादर गिलिगन हम जतो टेंशन रे खाउचे एपट सेपट बुलुचे तो फादर गिलिगन टेंशन रे एपट सेपट बुलिले से कहले मते टिके हालिया लागिला बोली मु सोई पडली बोली निजर ड्यूटी टाको मु धरि पारलिनी निजर ड्यूटी को अटेंड कर पारलिनी और सेथि में गोटे गरीब लोकटे रोगी लोकटे मरला मो दोष जो 10th stanza when you were gone he turned and died as merry as a bird the old priest Peter Gilligan he knelt him at that word the wife says that when you were gone he turned and died you came and when you went away the poor man my husband died as merry as a bird he died happily merry meaning merry merry meaning happy he died happily the old priest Peter Gilligan he knelt him at the word when he heard the word he knelt down he was shocked he was surprised he was astounded he was surprised he knelt down से सरप्राइज हे से तांग स्त्री कहला तमे जेतोले आस्थिलो फादर तमे जेतोले आस्थिलो तार घंटारे परे मोर हस्बैंड मरि गले खुशी रे गोटे पक्षी बेला खुशी रे मरि गले आ ए कथा सुनि के फादर गिलिगन कोन कले आश्चर्य हे कि आंठ मारी बस पड़ले 11th stanza he who hath made the night of stars for souls who tire and bleed sent one of his great angels down to help me in my need Father Gilligan is realizing that he who hath made the night of stars, he, God, who has made the star and the sky, for souls who tire and bleed, for the bleeding and tired souls, जो माने कि दुख रे अछंती सेही सोल मानक पई सेही स्पिरिट मानक पई सेही आत्मा मानक पई सेही लोक मानक पई sent one of his great angels down निजर जो गोटे देवदूत एंजल को तळ को पठैथिले टू हेल्प मी इन माय नीड टू हेल्प मी ओके एज आई एम हेल्पिंग पीपल दैट्स व्हाई माय गॉड वाज हैप्पी upon me and he liked my work and he sent an angel to help me when I was asleep फादर गिलिगन कोन करछन्ती रियलाइज करछन्ती जे भगवान एक्चुअली से फादर गिलिगन तो सोई पड़ते से आसवा संभव नहीं तांको बदल रे भगवान कोन करछन्ती आ गोटे देवदूत को पठैछन्ती से गरीब रोगी लोकटार केयर करबा पई जत्न नबा पई आ देवदूत कहा बेसरे आछन्ती फादर गिलिगन बेसरे आछन्ती he who is wrapped in purple robes with planets in his care had pity on the list of things asleep upon a chair he who is wrapped in purple robes he mane bhagwan God he who is wrapped in purple robes God who is wrapped wrapped which is derived from wrap meaning गुड़े हवा भगवान कोथरे गुड़े गेछंती पर्पल रोब रे गुड़े गेछंती माने पर्पल मीनिंग पर्पल इज अ वेरी रिच कलर सो भगवान को ड्रेस रो कलर होची पर्पल कलर बोले विश्वास करते क्रिश्चियनिटी रे आउ अधिकांश विश्वास करते भगवान को कलर व्हाइट कलर रोब से पिनंती किंतु एठी कहचंती WBX जे भगवान पर्पल कलर रोब पर्पल मीनिंग गाढ़ रंग गाढ़ रेड कलर रोब पिंधिचंती रोब माने ड्रेस पिंधिचंती with planets in his care who takes care of all the planets in this universe भगवान जे की रेड कलर रो ड्रेस पिनचंती आ टोटल यूनिवर्स रो सब प्लैनेट रो केयर नियंती at pity on the list of things
had pity दया करे कहा ऊपर मो भलिया गोटे तुच्छ मनुष्य ऊपर दया कले asleep upon a chair when I was asleep upon a chair मु जेतबेले सोई पड़थिली मो भलिया गोटे तुच्छ लोकटा को तुच्छ प्राणी को भगवान दया करे कारण मु अन्य मानकु हेल्प करथि मु टिके हेल्प करथुली बोली भगवान मत दया करी कि मो बदल रे आ जण को गोटे देवदूत को मो भलिया डुप्लिकेट करी पठे दिछन जाठु कि बड़ जिंस आ किछ नै भगवान जदि मो दया करछन तले भगवान मो प्रति प्लीज अछन खुशी अछन कारण मु भगवान काम करछि मु लोक मान को हेल्प करछि सेति मो भगवान मो ऊपर खुशी अछन आ गोटे फादर पई गोटे धार्मिक लोक पई याठु बड़ खुशी रे जिंस आ किछ नै So this is a very simple poem which tells us a story that help other people and God will help you. Thank you.